Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start our topic of oxidation, reduction, reactions of aldehydes and ketones, their characterization test, as well as their different type of uses. Uh, we are discussing our chapter number 12, and today is the last lecture of this chapter. That is your lecture number 4. Now let's start our lecture. Your first reaction of today lecture is addition of alcohol. It means when any aldehyde or ketone is added in alcohol, this reaction must take place in the presence of dry HCl. HCl is basically an acid. So the first step is the formation of an acetal. The acetal is a product which contains the functional group that is ether linkage. It means that when any aldehyde or any ketone react in the presence of ethanol or any type of alcohol, they will produce a product that is known as acetal. Uh, for this reaction, the alcohol and HCl it should be dry. If these are not dry, then the aldehyde and ketone will react with the moisture. As a result, your product that is acetal will not form from this reaction. Now I am going to share whiteboard here, so you people will fully aware of acetal. When, dear student, we will talk about an acetal. Acetal will represent the class of an organic compound which contain two ether linkage. It means when we always talk about any acetal, then we can say that an acetal is a compound which contain two ether linkage. This product is an example of an acetal. Here, acetal will represent the ether linkage. Acetal represent an ether linkage. And what is the formula of ether linkage? Due to COVID-19, the smart syllabus will not include your ether topic. So I am going to clear you what is an ether and what is their general formula. The formula of any ether, uh, wait student, it means that any compound which contain ROR functional group in them is known as an ether. It means we can say that any compound which contain ROR functional group in them, this group is known as an ether linkage. It means here is an organic compound which contain two type of ROR group, and in another side will also ROR group is also present. So any compound which contain two ether linkage, that compound is known as an acetal. Now we are going to move our slide. It means that it is an example of an acetal. In case of an acetal, two molecules of ethanol are utilized in this reaction. So from this reaction, the functionality that is OC2H5. It means from ethyl alcohol, the part that is OC2H5 will be removed from one portion, and in another molecule, same OC2H5 will be removed from ethanol portion. As a result, your product is known as an acetal, and the IUPAC name of the system is known as 1,1-diethoxyethane. It means we can doing the numbering of this compound from this carbon and this carbon. It means if this carbon is has
number one, and this carbon has number two. So the group, that is your ether group OC2H5, is attached at an position number one. In the same way, another acetal portion will also attach at carbon number one. So the compound has name is OC2H5 has a name of ethoxy. It means this is toxic group has two in number, so we can say that the name of this compound is known as 1,1-diethoxyethane. Hopefully it will clear to all of you, and if you have any ambiguity, I am further clear to all of you guys. So we will see that I have to state that here is your CH3, that is H, that is here OC2H5, and at another site here is OC2H5. uh, I think there is some confusion on whiteboard. Now I am going to uh, now student, you will further. Now I am going to write the other portion on this side, that is your C2H5. Now let's start the numbering. That is carbon number 1 and that is carbon number 2. It means from carbon number 1, this portion is named as an ethoxy. That portion is known as an ethoxy due to the presence of ether linkage. This will also an ethoxy, and this is an other ethoxy. So these both ethoxy group are attached at carbon number 1 position. So hopefully it will be clear to all of you that this compound has name of 1,1-diethoxyethane, because these two carbon are present in along this chain. So we can say that any compound which bears two carbon atom is known as ethane. Uh, Now, dear student, we will move our next slide. Sorry, there's some issue in my slide. That's why your lecture is delayed. Now we will see the other portion of this reaction. We can say that the addition of an alcohol has been used to protect this aldehyde functional group. It means this ethanol group, this ethanol molecule
has been utilized to protect this aldehydic functional group. As a result, we can protect this group from any acid reaction. For example, this reaction can be reversed to the formation of an aldehyde and an ethanol. As a result, your reactant will be produced once again in the presence of an acid. It means the your product, that is an acetal, when produced with water, then the acetal formation can be reversed in the presence of an acid. It means this reaction is an example of a reversible reaction. If any reaction is reversible in nature, then we can say that if this reaction move toward forward side, then the reaction will also move toward backward side. As a result, the acetal formation can be reversed in the presence of any acidic media. So we can say that this reaction can be used to protect the aldehydic group against any alkylic oxidizing agent. इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि इस रिएक्शन को हम इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके ज़रिए आप किसी भी एल्डिहाइड की फंक्शनैलिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आपका रिएक्शन जो है वो किसी एसिडिक या बेसिक मीडिया के अंदर हो रहा है और आपने और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो उस दौरान आप ये चाहते हैं कि आपके एल्डिहाइड ग्रुप को कुछ ना हो, तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि पहले आप एथेनॉल को रिएक्शन में ऐड कर देंगे। एथन यानी आप मेन रिएक्शन प्रोसीड करवाने से पहले आप उसके अंदर एथेनॉल को ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपका ये प्रोडक्ट दैट इज योर एसिटाल विल बी फॉर्म्ड। acetal has no if acetal doesn't create any type of reaction interference with your main ingredient, so we can say that this reaction can be used to protect the aldehyde group functionality, and we can reverse back this reaction in the presence of any acidic media. As a result, our aldehyde or ketonic functionality can be regenerated. But an important point, that is the only aldehyde will give this reaction, but ketone do not react under these conditions. Before going to start the reduction reaction, I will share some important points here. That is when any aldehyde, we can say that when any aldehyde is oxidized, it will be converted into an carboxylic acid. It means when any species, that is aldehyde, is oxidized, it will be converted into a carboxylic acid. In a similar way, we can say that this aldehyde group will be formed by the oxidation of an alcohol. This aldehyde group will be formed by the oxidation of alcohol. And the oxidizing media for this reaction are potassium dichromate, that is K2, Cr2O7 in the presence of H2SO4, that is sulfuric acid. It means when alcohol is oxidized in the presence of potassium dichromate and sulfuric acid, then this alcohol functionality will first converted into aldehyde. It means in the presence of an
alcohol. The functional group for alcohol is that is OH, right? Uh, any alcohol will be oxidized in the presence of potassium dichromate and sulfuric acid. Then the alcohol will in first step will be converted into aldehyde. The functional group of aldehyde is CHO. After further oxidation, we can say that this aldehyde functionality will be converted into carboxylic acid. From this point, it is clear to all of you that when any alcohol is oxidized, only the primary alcohol. There are different type of alcohol category which we have studied in our previous topic. That is, there are three types of alcohol. One is known as primary, other is known as secondary, and third one is known as tertiary. So I am just writing their name. That is primary, other is known as secondary, and the third one is known as tertiary. It means if there are these three types of alcohol, so we can say that these three types of alcohol is known as primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. The primary alcohol is always oxidized to aldehyde. Primary alcohol always oxidized to aldehyde, and aldehyde is always oxidized to carboxylic acid. डियर स्टूडेंट, ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आप लोगों ने याद करनी है कि जब भी आप बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगी, फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड, और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कार्बोजाइलिक एसिड. while in case of secondary alcohol there are some other point, while in case of tertiary alcohol there is an other point. uh, Now I am going to write their names only. It mean I have uh, it mean that in this reaction we can say that primary alcohol oxidized to aldehyde, while secondary alcohol always oxidized to ketone, while tertiary alcohol oxidized to alkene. Now dear student, you will have to memorize all these points. That is uh, it means that we can say that secondary alcohol oxidized to ketone, while tertiary alcohol oxidized to alkene. सो स्टूडेंट, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इस छोटी सी स्कीम को पहले तैयार करना है, तब आपको इन रिएक्शन की आसानी से और जल्दी से समझ आ जाएगी कि पहले आप क्या करेंगे कि अल्कोहल की तीनों टाइप्स के बारे में मैंने आपको बारहा क्लास में बताया कि थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल क्या होती हैं. प्राइमरी अल्कोहल हम किसको बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल किसको कहते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल किसको कहते हैं. इट मीन प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होती हैं कि जिनमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन फर्दर आगे से एक कार्बन से अगर अटैच हो, it means that that alcohol is known as primary alcohol. By the oxidation of primary alcohol, in first step the aldehyde is formed, and in another step the carboxylic acid is formed. While in case of secondary alcohol is converted into ketone, while the oxidation of tertiary alcohol is not possible due to some steric hindrance and some other reasons which is beyond your textbook topic. So if we are using the strong oxidizing media, the strong oxidizing agent, then the oxidation of tertiary alcohol will be possible and your product is an alkene. So we can say that as oxidation is possible, in the same way the reduction will also possible. It means the oxidation and reduction both are inverse of each other. It means that from these point there are some summary arises. That is, as we have seen that primary alcohol oxidized to aldehyde, in the same way
when aldehyde is reduced, when any aldehyde is reduced, then your product is a primary alcohol. It means oxidation and reduction both are reverse of each other. As we have seen that when primary alcohol is oxidized, then your product is an aldehyde. And if we reduce this aldehyde, then your product is again converted into your reactant side, that is your primary alcohol. In the same way, when any ketone is reduced, it means that when any ketone is reduced, then we can say that your product is your secondary alcohol. And the same process will take place with an alkene, but these 2 points must be memorized by all of you, that as we are use the oxidizing agent, that is potassium dichromate, as well as the sulfuric acid. In the same way, we will use different type of reducing media, that is sodium borohydride, that is NaBH4, or some other metal, that is nickel, platinum, palladium. These are the catalysts which are used for the reducing or for the reduction of any alcohol or any aldehyde. So we can say that the oxidation and reduction both are reverse of each other. तो स्टूडेंट आप लोगों ने करना क्या है कि पहले आप लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टॉपिक को मेमोराइज करने से पहले एक छोटा सा चार्ट अपनी नोटबुक पर ड्रा कर लेना है और अपने माइंड में इन बातों को जहन में बिठाना है कि ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन कौन से मीडिया इस्तेमाल करते हैं और रिडक्शन के लिए हम कौन कौन से एजेंट को यूटिलाइज करते हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होती है, एंड व्हाट इज योर टर्शरी अल्कोहल। नाउ वी विल मूव अवर स्लाइड, that is uh, reduction reaction. It means aldehyde and ketone both are reduced. As I have told to all of you that when any alcohol and any alcohol that is primary in nature, by their oxidation it will be converted into aldehyde, and by using the reducing media, it means the reducing media in this case is sodium borohydride, that is the formula of sodium borohydride। और इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट, दैट इज NaBH4। NaBH4 करता क्या है कि जो आपके पास ये कंपाउंड है, दैट इज योर एल्डिहाइड, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मेथनल। मेथनल या फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो NaBH4 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेथनॉल में। इन द सेम वे अगर ये कंपाउंड आपके पास एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल हो तो ये कंपाउंड एथेनॉल में कन्वर्ट होगा। एंड इफ दिस कंपाउंड इज योर कीटोन, दैट इज एसीटोन, या फिर इसका साइंटिफिक नेम है प्रोपानोन। तो प्रोपानोन क्या होगा कि ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज 2 प्रोपानोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। So now we will see the further detail of reduction with sodium borohydride. It means aldehyde and ketone both are reduced to alcohol। अभी आपको मैंने व्हाइट बोर्ड पर भी समझाया था कि जब भी आप एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। इट मीन ये रिएक्शन जो है वो आपका 2 स्टेप में कैरी होगा। फर्स्ट स्टेप में आपने एल्डिहाइड या कीटोन में क्या ऐड कर देना है, दैट इज योर सोडियम बोरोहाइड्राइड। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस चलेंगे। इट मीन जब ये दोनों स्टेप इकट्ठे टेक प्लेस होंगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। इट मीन द रोल ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका रोल क्या होगा कि वो इसके कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसे कार्बन टू ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन टू ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनेंगे। अब इसका मतलब क्या है मल्टीपल बॉन्ड का, कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यानी अल्कीन की अल्काइन की यानी कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वो फॉर्म नहीं होंगे, बल्कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो हमारा कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। Now, student, before discussing the mechanism, first we will see the structure of sodium borohydride.
There are other different type of reducing agent, that is lithium aluminum hydride will also present, but we are not discussing here the lithium aluminum hydride, so we will discuss only the structure of sodium borohydride. अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो हम ये कहते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड में एक जो है वो Na पॉजिटिव होता है और बोरोन के साथ चार हाइड्रोजन के एटम होते हैं। इट मीन अगर बोरोन के साथ चार हाइड्रोजन के एटम होते हैं तो बोरोन के ऊपर चार्ज आ जाता है स्टूडेंट -1। इट मीन अगर आप इसके स्ट्रक्चर को लिखेंगे तो आप बड़ी ब्रैकेट डाल के ऐसे -1 का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या मौजूद है, BH4 में बोरोन के साथ चार हाइड्रोजन है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इट मीन एक हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट मीन इन दिस केस हाइड्रोजन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज, so any species which carry a negative charge will play its role as a nucleophile। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो आपके पास एजेंट है दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसके अंदर जो H नेगेटिव है वो अपना रोल प्ले करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। तो अब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे डियर स्टूडेंट। और इसके मैकेनिज्म में क्या होगा, अभी हमने बात की थी कि जो हाइड्राइड का H नेगेटिव आयन है वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन है, इसकी नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये क्या करती है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखती है। तो जब भी कोई कार्बन अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखे तो जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है वो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी पर अटैक करती है। अटैक करने का मतलब ये होता है कि ये नेगेटिव आयन इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड क्या करेगा, डेवलप करेगा, and this whole bond will be shifted toward the oxygen side. And in second step, as a result, the structure is known as an alk oxide ion। स्टूडेंट इस कंपाउंड का या इस स्ट्रक्चर का क्या नेम होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्क ऑक्साइड आयन। और एल्क ऑक्साइड आयन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो एल्क ऑक्साइड आयन है आपका O नेगेटिव, ये क्या करेगा, वाटर से इस पॉजिटिव आयन ले लेगा एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल एज वेल एज द जनरेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन विल टेक प्लेस। Now we will see another type of reduction that is known as the catalytic reduction। इसको हम catalytic reduction इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये reduction डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल की प्रेजेंस में होती है, जिसके अंदर हमारे पास प्लेडियम मेटल, प्लेटिनम या फिर निकल हो सकती है। और इसके नतीजे में अभी आपको बताया था कि अगर प्राइमरी अल्कोहल होगी तो वो आपके पास सॉरी एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड होंगे। तो ये दोनों जो हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्राइमरी अल्कोहल में। जबकि कीटोन हमेशा रिड्यूस होके सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट आपने इनकी कंडीशन, इनके स्ट्रक्चर्स और उनके फार्मूलाज को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके तैयार करना है। As we have seen earlier that as oxidation reduction is take place, in the same way oxidation will also take place, but the oxidation is totally reverse of reduction. And there are different type of oxidizing agent which are used for the oxidation of aldehyde and ketone, and the name of these agent are potassium dichromate. The formula is K2Cr2O7 and its name is potassium dichromate. Other compound is known as sulfuric acid. Third one is known as potassium permanganate and sulfuric acid as well as dilute nitric acid. All these agents are an example of an oxidizing agent. And what is the main role of these oxidizing agents? They will include this oxygen into an acetaldehyde or any aldehyde or ketonic functionality. As a result, these compounds are directly converted into a carboxylic acid. It means when any aldehyde, it means by the oxidation of aldehyde, the aldehyde always oxidized to carboxylic acid, and in this case, your aldehyde is acetaldehyde and your product is acetic acid. In the same way, when propion aldehyde, propion will refer any compound which contains three carbon atoms but with the functionality of aldehyde, that is CHO. So the carbon of aldehyde will also included in the counting, that is propion aldehyde, and propion aldehyde will oxidize to propanoic acid.
अब इसके अंदर जो स्टूडेंट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दी हाइड्रोजन एटम जो कि कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच होता है एल्डिहाइड में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओएच में। ये भी आपको बताया था कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम होता है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओएच के अंदर। एज ए रिजल्ट ये कंपाउंड आपका क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो आपके सेम रहेंगे। इट मीन अगर रिएक्टेंट की साइड पे दो कार्बन है तो प्रोडक्ट की साइड पे भी आपको दो ही कार्बन मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट अभी आपको बताया कि जिस तरह हमने देखा कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है, इन द सेम वे कीटोन्स की भी ऑक्सीडेशन होती है। इट मीन अभी आपको हमने ये बात डिस्कस की थी कि कीटोन की ऑक्सीडेशन इतनी आसानी से नहीं होती जितनी कि एल्डिहाइड की होती है, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन टू हाइड्रोजन की बॉन्ड की डेवलपमेंट होती है। बट इन केस ऑफ कीटोन, the ketonic functional group, that is your carbonyl group, is sandwiched between two carbon atom or more than two carbon atom. So in simple word, we can say that this carbon will develop a strong bond with another carbon atom, and the single bond of this carbon atom with another carbon atom is an example of strong carbon to carbon bond. So in general, the mild oxidizing agent will have no effect on the oxidation of these two carbon atoms. So they are only oxidized. If we want to oxidize this ketone, we need a very strong oxidizing agent. And for oxidation of ketone, we have only potassium dichromate with sulfuric acid or potassium permanganate with sulfuric acid, or concentrated nitric acid will also be used for the oxidation of ketone. It means in case of oxidation of ketone, only the carbon atom which is adjacent to the carbonyl group, it means ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है और इसके साथ एडिशन का मतलब होता है स्टूडेंट बिल्कुल साथ। इट मीन वो कार्बन एटम जो इस कार्बोनाइल, कार्बोनाइल क्या है आपके पास, सी डबल बॉन्ड ओ है। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जो कार्बन होगी वो जो है वो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन का अटैक होगा। इट मीन इन दोनों का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इट मीन जो एक कार्बन जनरेट होगी वो फॉर्मिक एसिड में, दैट इज ACOH में कन्वर्ट होगी, और जो पीछे दो कार्बन बचेंगी वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज एन एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जब भी बॉन्ड इनका टूटेगा तो बॉन्ड टूटने का इफेक्ट क्या होगा कि जहां जहां से बॉन्ड टूटेंगे चाहे जितनी मर्जी कार्बन रिलीज हो, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बने, लेकिन उनके अंदर दोनों में आपने स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करनी है। अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने डिलीवर करना है, दैट इज अबाउट सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन में। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप की राइट साइड या लेफ्ट साइड पे अगर आप कार्बन एटम की तादाद कैलकुलेट करें, अब यहाँ देखें इस कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे यहाँ कितने कार्बन है, ओनली वन कार्बन। इस साइड पे कितने कार्बन है, टू कार्बन। इट मीन ये वो कीटोन है जो कि एग्जाम्पल है अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि भी हमने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन को डिस्कस करना है। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि वो कीटोन या ऐसी कीटोन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कीटोन की कैटेगरी क्या होंगी कि आपने कार्बोनाइल ग्रुप को पहले अंडरलाइन कर लेना है, इस कार्बन को काउंट नहीं करना काउंटिंग में, ठीक है। इस कार्बोनाइल की लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपने कार्बन को चेक करना है। अगर इधर भी एक कार्बन हो और इधर दो कार्बन हो, इट मीन ये तादाद बराबर नहीं आ रही, तो ये एग्जांपल होगी अनसिमेट्रिकल कीटोन की। लेकिन फर्ज करें अगर यहाँ भी दो कार्बन होते और यहाँ भी दो कार्बन होते तो ये एग्जाम्पल होती सिमेट्रिकल कीटोन। So means that we can say that the carbon atom which is joined to the smaller number of hydrogen atom is preferentially oxidized। अब यहाँ देखें ये कौन सी कीटोन है, सिमेट्रिकल है। इसको हम सिमेट्रिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। इसकी दोनों साइडों पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, दैट इज वन एंड वन। तो ऑक्सीडेशन इस साइड से भी हो सकती है और इस साइड से भी हो सकती है। तो अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे ना, इस वाले बॉन्ड को, तो ये एक कार्बन बचती है और ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फॉर्मिक एसिड में। और पीछे कितनी कार्बन बची, दो, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एसिटिक एसिड में। एज ए रिजल्ट हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऑब्टेन होते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर आप बात करेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन की, अब ये कौन सी कीटोन है, अनसिमेट्रिकल। इसे अब हम अनसिमेट्रिकल क्यों कह रहे हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप को आप हाईलाइट कर लें।
इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ एक कार्बन है और दूसरी साइड पर दो कार्बन है। इट मीन ये ऐसी कीटोन है जिसके अंदर अनसिमेट्रिकल नंबर में यानी अनइवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम मौजूद हैं, जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो डिसाइड करते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो अब इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन किस साइड से होगी, तो वो कहते हैं कि ऐसे केस में क्या होगा कि एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ऑक्सीडेशन यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है, इस साइड से भी हो सकती है, यानी बॉन्ड कार्बन टू कार्बन का यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि बॉन्ड हमारा इस साइड से भी ब्रेक हो सकता है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि द कार्बन एटम ज्वाइन टू द स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी आपको क्या बता रहे हैं कि वो बॉन्ड कार्बन का जिसने ज्वाइन किया हुआ है हाइड्रोजन एटम्स की कम तादाद को, वहां से प्रेफरेंशियली ऑक्सीडेशन होती है और कार्बोनाइल ग्रुप रिमेन्स विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। यानी ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसकी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसे कंपाउंड के साथ चला जाऊं जिसके पास कम से कम कार्बन की तादाद है। इट मीन फर्स्ट करें ये बॉन्ड यहाँ से हमने तोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप अब किसके साथ गया, इसके साथ, तो इसके पास कितने कितने अल्काइल ग्रुप जाएंगे, एक अल्काइल ग्रुप जाएगा। लेकिन अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटता तो क्या होता कि ये कार्बोनाइल के साथ फर्दर दो कार्बोनाइल ग्रुप जाते। तो उन्होंने ये बताया कि जब भी अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की आपने ऑक्सीडेशन करवानी है तो ये बात जहन में रखनी है आप लोगों ने कि हमेशा ऑक्सीडेशन उस साइड से या उस एंड से होती है जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप अपने साथ मिनिमम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप को लेकर जाए, या दूसरे लफ्जों में ऑक्सीडेशन उस साइड से हो सकती है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कम हो। इट मीन यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो प्रेफरेंशियली ऑक्सीडेशन उस साइड से होती है, उस कार्बन की साइड से होती है जिसके अंदर स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट हो। एज ए रिजल्ट फाइनली ये पता चला कि ये बॉन्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन में यहाँ से टूटेगा। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यहाँ भी दो कार्बन एटम प्रेजेंट है, यहाँ भी दो कार्बन एटम प्रेजेंट है। एज ए रिजल्ट टू मॉलिक्यूल ऑफ acetic acid will be formed. Now student, we will see the different type of identification of carbonyl compound के different type of test क्या होते हैं carbonyl compound के, उसको आज हम बहुत डिटेल से देखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट वन टेस्ट है दैट इज 2,4-DNPH टेस्ट। ये आप लोगों को मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी बताया था कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ये इसका फार्मूला है। जब भी और ये इस कंपाउंड का कलर है, 2,4-DNPH का ये कलर होता है। इसके अंदर अगर आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ऐड कर देते हैं तो इससे क्या होता है, येलो कलर के, जिससे आपको यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में नजर आ रहे हैं, येलो या फिर रेडिश कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के सोल्यूशन के साथ। सेकंड स्टूडेंट, एक और टेस्ट आप लोगों ने इन दोनों की रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं, सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन भी आपको मैंने जनरल मैकेनिज्म में पढ़ाया था एल्डिहाइड और कीटोन्स के। और उसमें आपको बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ कैटेगरी होती है जिसमें एसीटोन की हम बात करते हैं और जिसको हम लिखते हैं स्मॉल मिथाइल कीटोन में। जब भी ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनसे हमेशा व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमें हासिल होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमने बात की कि जब भी हम 2,4-DNPH को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो मोस्टली इसके प्रेसिपिटेट येलो होते हैं। तो येलो प्रेसिपिटेट आम एल्डिहाइड के साथ देते हैं, लेकिन अगर ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट बन जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें ऐसी एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है जो कि एरोमेटिक इन नेचर है। एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर बेंजीन के रिंग भी प्रेजेंट है। थर्ड वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। इसको बच्चे हम बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, या इसको हम सिंपल जो है सिल्वर मिरर टेस्ट का भी नाम देते हैं। ये टेस्ट बच्चों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इक्वेशन और इनके रिएक्शन जिस तरह से प्रोडक्ट लिखे हुए हैं आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे से तैयार करना है। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब को क्या कर देता है, इसका मिरर बना देता है। तो जितने भी हाई क्वालिटी के मिरर होते हैं वो इस रिएक्शन के जरिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इस रिएक्शन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात हो रहा है कि हमेशा एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, कीटोन्स ये रिएक्शन हमें प्रोवाइड नहीं करते। Now we will see what is tolerance reagent. Tolerance reagent, they are basically the ammoniacal solution of silver nitrate. It means if silver nitrate solution has been dissolved in ammonium hydroxide or in simple ammonia solution, then the resulting compound is known as the tolerance reagent.
And these tolerance reagents solution, when react with each other, they will form the complex of silver ammonium hydroxide complex. And this silver ammonium hydroxide complex will further react with only aldehyde solution. And when after the addition and the test tube is warm, they will form or develop a silver mirror inside of the test tube. So, due to the formation of silver mirror, this test is known as the tolerance reagent test. And why the silver is found? Because the silver metal is reduced in the form of Ag. As a result, there are different type of product, that is ammonium acetate, silver, ammonia, and water will be formed. And by this reaction, silver will also form inside the test tube. तो स्टूडेंट आप लोगों ने इस बात को अच्छी तरह से इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है और इसको तैयार करना है. नाउ अनदर टेस्ट इज फेलिंग सॉल्यूशंस टेस्ट. और इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले देखेंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है. तो बच्चों, इसको बनाने के लिए हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, कोई भी एल्कली ले सकते हैं. इस केस में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं. इसके बाद बच्चों एक साल्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रोशले साल्ट. रोशले साल्ट का नाम क्या होता है? पोटेशियम सोडियम टार्टरेट. और ये इसका फार्मूला है. ये आप लोगों ने तैयार नहीं करना, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपके माइंड में कंसेप्ट डेवलप हो कि फेलिंग सॉल्यूशन हम बोलते किसको हैं. तो याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आप कोई अल्कली ऐड करते हैं और उसमें आप रोशले साल्ट, दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और इनको आप वार्म अप करें, तो ये इस तरह का कॉपर का अल्कलाइनिक मीडिया में एक कम्प्लेक्स डेवलप होता है. इस कम्प्लेक्स को हम बोलते हैं फेलिंग सोल्यूशन. ठीक है. और ये जो फेलिंग सोल्यूशन होता है, ये क्या करता है? फेलिंग सोल्यूशन का बच्चों ये कलर होता है, दैट इज ब्लू, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट. आपने यहाँ देखा ना कि आपने ये रिएक्शन किससे स्टार्ट करना है? कॉपर सल्फेट. और ये तीनों चीजें जब ऐड करते हैं तो ये जो फेलिंग सोल्यूशन बनता है, इसका कलर क्या होता है? ब्लू. ठीक है. तो कोई भी एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब होता है जिसमें कोई भी बेंजीन का रिंग ना हो, ठीक है, जो आर्म स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड हो, वो क्या करती हैं? इस तरह का इंटो की तरह का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करती हैं. किसके साथ? फेलिंग सोल्यूशन के साथ. इट मीन ये अगर आपके पास फेलिंग सोल्यूशन है, तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें आप ऐड करेंगे एल्डिहाइड का सोल्यूशन. और जब भी एल्डिहाइड का सोल्यूशन ऐड करते हैं, तो इससे ऑरेंज रेड या ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं. और बनाने के लिए आपने करना क्या है कि इस टेस्ट ट्यूब को आपने वार्म अप करना है. तो याद रखिएगा, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस रीजन टेस्ट, ये तीनों टेस्ट पॉजिटिव होते हैं ओनली ऑन फॉर एल्डिहाइड, बट कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट. So we can distinguish between aldehyde and ketone by Fehling solution as well as tolerance reagent and Benedict solution test. The equation for Fehling solution as well as Benedict solution both are same, as we can say that this reaction will take place in the presence of any aldehydic media, copper hydroxide, sodium hydroxide, and the formation of cuprous oxide. इस कंपाउंड का नेम है Cu2O, इसे हम बोलते हैं cuprous oxide. इसकी फॉर्मेशन होती है और इसका कलर क्या होता है? दैट इज रेड. Another test which is used for the identification of carbonyl compound, that is your Benedict solution test. And what is Benedict solution? These are the formula of you can distinguish between these three types of reagent. टॉलेंस रीजन के लिए हम लिखते हैं सिल्वर अमोनियम का ये जो कम्प्लेक्स होता है, इसको हम बोलते हैं. फेलिंग सोल्यूशन के लिए हम कहते हैं कि इसमें भी कॉपर सल्फेट होता है, बेनेडिक्ट में भी कॉपर सल्फेट होता है. लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि इसके लिए आप सोडियम पोटाशियम का टार्टरेट वाला कम्प्लेक्स इस्तेमाल करते हैं, बेनेडिक्ट के लिए आप सोडियम पोटाशियम सिट्रेट का कम्प्लेक्स इस्तेमाल करते हैं. ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि फेलिंग सोल्यूशन में और बेनेडिक्ट में डिफरेंस क्या है. कि फेलिंग सोल्यूशन में आप सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का कम्प्लेक्स लेते हैं, while in case of Benedict solution you will use the solution of sodium potassium citrate. So we can say that the same reaction will take place, as this reaction already you have seen it in the reaction of Fehling solution. The equation is almost same, and the only difference is that there is a alkylic solution containing a cupric citrate complex. ठीक है. तो इसमें हम क्यूपिक सिट्रेट कम्प्लेक्स इस्तेमाल करते हैं. इसका भी कलर ब्लू होता है. इसके अंदर डिफरेंट कलर की चेंजेस होती हैं. फर्स्ट में ये ग्रीन होता है, फिर ये लाइट येलो होता है,
then orange, and finally brick red precipitate will be formed with the solution of any aldehyde and vanillate solution. तो इसके लिए भी आपने इस solution को बॉयल करना है, और ब्रिक रेड precipitate जैसे ही फॉर्म होंगे तो ये indicate करेगा कि your given compound is an aldehyde, not a ketone, because ketone do not give this test. Sixth one and the last one test is known as the sodium nitroprusside test. Dear student, in sodium nitroprusside test, ketone will give this test, and this test will be positive only for ketone, not for an aldehyde. तो आप लोगों ने इस बात को मेमोराइज रखना है कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो तमाम टेस्ट देते थे, लेकिन जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का टेस्ट है वो एल्डिहाइड नहीं देते, बल्कि वो सिर्फ कीटोन देते हैं, और जैसे ही कीटोन दे तो वो ये इस तरह के वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं उन अल्कलाइनिक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ। जब आप इनके अंदर ड्रॉप वाइज सोल्यूशन को ऐड करते हैं, और अल्काइनिक का मीन ये होता है कि इसमें आप कोई बेस या कोई अल्कली ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो अब हम देखेंगे दैट इज योर यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, के फॉर्मेल्डिहाइड के इस्तेमालात कहाँ कहाँ पर हैं और इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका फर्स्ट वन यूज है फॉर्मेल्डिहाइड का, कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजन्स लाइक यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्लास्टिक सच एज बेकलाइट। ये बच्चों आप लोगों ने इस तरह की चूड़ियां कई दफा देखी होंगी। ये बेसिकली कांच नहीं होता, शीशा नहीं होता, बल्कि ये एक प्लास्टिक होता है जिसका नेम होता है बेकलाइट। तो ये आपके सामने एग्जांपल है बेकलाइट की। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फर्स्ट वन यूज किया है कि इससे आप डिफरेंट तरह के रेजन यानी पॉलीमर लाइक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, और कुछ पॉलीमर लाइक बेकलाइट की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड वन इसका यूज क्या है कि इसको हम दो तरह की डाइज, ये डाई है दैट इज योर इंडिगो डाई, एंड द अनदर डाई दैट इज नोन एज द पैरा रोजा एनिलिन। इसका कलर स्टूडेंट रेड होता है और इंडिगो का कलर ब्लूइश होता है। तो ये इन दोनों की फॉर्मेशन में इस्तेमाल की जाती है। और जो कि आगे फर्दर हमारी डाई इंडस्ट्री यानी जो कलर रंगने की इंडस्ट्री है, या दीगर आपके जो भी अमाइन के कंपाउंड होते हैं, एजो के कंपाउंड होते हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए हमें इन डाइस की जरूरत होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन डाइस को हम इसको यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज डाइस। थर्ड वन है कि इट इज यूज एज अ डी कलराइजिंग एजेंट, यानी अगर आपने किसी चीज में से कलर खत्म करना है, स्पेशली किसके अंदर से वॉट वॉट बोलते हैं बच्चों बर्तनों को, कि अगर कोई आपके पास ऐसे बर्तन है जो कलरफुल से हैं, जो आप चाह रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर वो कलर उनके अंदर ना रहे, तो उस कलर को रिमूव करने के लिए आपने किसको इस्तेमाल करना है, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। एंड अदर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज अबाउट फार्मलीन। और स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि फार्मलीन क्या होती है, हम इसको कैसे तैयार करते हैं। कि 40% एक्वस सोल्यूशन जो है फार्मेल्डिहाइड का वाटर में तैयार करते हैं, और फिर इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, फार्मलीन। और इस फार्मलीन के सोल्यूशन को आप जर्म्स को किल करने में डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, जर्मिसाइड, फंगीसाइड यानी फंगस है या कोई जर्म्स हैं इनको किल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आप लोगों ने मैनी टाइम्स जो है बायो लैब्स में या जो आपकी डिफरेंट जोलॉजी लैब्स हैं वहाँ पे आप लोगों ने ये इस तरह के स्पेसिमेन देखे होंगे, जिनको हम मोस्टली प्रिजर्व कर लेते हैं किसके अंदर, एनिमल को फॉर्मेल्डिहाइड यानी फार्मलीन के सोल्यूशन में। और इसके अलावा इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज आ स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। अनदर यूज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज दी फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर। अभी आपको बताया कि यूजेस में आपको मैंने कहा था कि जो हाई क्वालिटी के जो मिरर होते हैं, जो शीशे होते हैं, वो हम टॉलरेंस रीजन की मदद से बनाते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड यानी कोई भी एल्डिहाइड का अगर आप सोल्यूशन लेंगे तो इसके जरिए आप सिल्वरिंग ऑफ मिरर परफॉर्म कर सकते हैं। Another important use of formaldehyde that it is also used in making a medicine that is known as a eutropin। बच्चों ये जो है वो आपके सामने स्ट्रक्चर है इस मेडिसिन का, जिसका नेम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन कैसे बनती है कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड में 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल ऐड करें तो इससे आपके पास ये वाली मेडिसिन। अभी आप लोगों ने बच्चों इसकी इक्वेशन ये याद नहीं करनी, ठीक है। ये सिर्फ आपके सामने मैं जस्ट लैबोरेशन के लिए डाल रही हूँ ताकि आपको माइंड में पता चले कि यूरोट्रोपिन क्या चीज़ है। ये एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, ठीक है। ये एक दवाई का नाम है यूरोट्रोपिन, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं यूरिन से रिलेटेड जो एंटीसेप्टिक
के तौर पर। और इसकी तैयारी के लिए भी हमें फॉर्मेल्डिहाइड को यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका एक और इस्तेमाल है कि इसको हम यूज करते हैं इन मेकिंग फार्मामिंट। फार्मामिंट क्या चीज है? फार्मामिंट दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक है जी फॉर्मेल्डिहाइड और सेकंड क्या है, लैक्टोज। और जब ये दोनों इकट्ठे हों तो इसके जरिए आप जो गले में खराश होती है, ये देखें, ये आपके सामने एक फार्मामिंट, ये बेसिकली टैबलेट्स होती हैं, गोलियां होती हैं, ठीक है, जिसको आप गले की खराश दूर करने के लिए, जैसे ये स्टेप्सल वगैरह नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह ही फॉर्मामिंट जो है ये एक मेडिसिन का नाम है, जिसको आप गले के से कोई भी इन्फेक्शन है या कुछ भी इस तरह से है तो उसको दूर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इन दी प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन, यानी ऐसी वैक्सीन जो पोलियो के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है, तो उसकी तैयारी के लिए भी हमें फॉर्मेल्डिहाइड को यूज करना पड़ता है। Now, at the end of your topic, that is the uses of an acetaldehyde. तो जिसका अभी बताया था कि तमाम एल्डिहाइड्स हो या फॉर्मेल्डिहाइड हो, ये सब के सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सिल्वर मिरर। तो सिल्वर मिरर इन दोनों का एक कॉमन यूज है। इसके बाद अनदर यूज इसका क्या है कि इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड लाइक विनीगर जिसको हम बोलते हैं, या इसका जो है वो आईयूपीएसी नेम क्या है, दैट इज एथानोइक एसिड। इसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड, एन ब्यूटानोल, एथानोल, 2 इथाइल 1 हेक्सानोल। के बाद विनाइल एसीटेट, पेरल्डिहाइड, ये आपको बताया था ये पॉलीमर होता है, ये एसिटल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल थे जो हमने लिए थे। और इसी तरह जो है वो इथाइल एसीटेट, इन सब की प्रेपरेशन के लिए हमें एसिटल्डिहाइड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग दी एसिटल्डिहाइड अमोनिया। ये अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड अमोनिया है तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ रबर एक्सेलरेटर के तौर पे। यानी अगर आप रबर इंडस्ट्री में सिंथेसिस कर रहे हैं रबड़ की, तो उसके प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड और अमोनिया इन दोनों के सोल्यूशन को अगर आप इकट्ठा इस्तेमाल करें तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ रबर एक्सेलरेटर के तौर पे। उसके बाद जिसका एक और इम्पोर्टेंट यूज है कि इसके जरिए आप दो तरह की चीजें तैयार कर सकते हैं, जिसमें एक का नेम है क्लोरल हाइड्रेट, उसके बाद है एथानोल ट्राइमर एंड टेट्रामर। अब क्लोरल हाइड्रेट और एथानोल ट्राइमर, ट्राइमर का मतलब होता है जिसके 3 मॉलिक्यूल अगर आप एथानोल के लें और क्लोरल हाइड्रेट लें, तो इन दोनों को जो इकट्ठा कम्बिनेशन होता है, इसके जरिए आप हिप्नोटिक ड्रग बना सकते हैं। एंड व्हाट इज हिप्नोटिक ड्रग? इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पिल्स। जिन लोगों को अक्सर जो लोग बेखाबी का शिकार रहते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, तो वो सोने के लिए जिन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो वो स्लीपिंग पिल्स कहलाती हैं। और इनमें से कुछ स्लीपिंग पिल्स में क्लोरल हाइड्रेट एंड एथानोल ट्राइमर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एथानोल टेट्रामर को आप स्लग पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आमतौर पे वो स्लग जिसको हम स्नेल या उर्दू में हम इनको घूंगा भी बोलते हैं, जो मोस्टली गार्डन वगैरह में पाया जाता है, तो इनको डेड करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, इनको जहर देने के लिए आप एथानोल टेट्रामर को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ स्लग पॉइजन के तौर पे। इसके बाद स्टूडेंट फोर्थ वन यूज है कि जो एसिटल्डिहाइड होते हैं इसके जरिए हम एंटीसेप्टिक इनहेलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नेजल के हैं, जो नाक से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनको दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये यूज आपको पहले ही बताया था कि ये यूज एल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों में कॉमन है, यानी इसके जरिए आप सिल्वरिंग ऑफ मिरर परफॉर्म कर सकते हैं। 6 वन यूज है कि इट इज यूज टू मेक फिनोलिक रेजन्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स। इट मीन जितने भी फिनोलिक कंपाउंड होते हैं इनके जरिए जो आप ड्रग्स तैयार करते हैं, उनके सिंथेसिस के लिए भी हम एसिटल्डिहाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज जो है वो हमारा टॉपिक यहाँ तक एंड होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे और इसके साथ जो है वो हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी जो है वो करेंगे। तो आज जो है वो हमारा चैप्टर एंड हो गया है। तो इससे रेलिवेंट आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो डियर स्टूडेंट मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी। एंड बट मैंने एक बात और नोट की है बच्चों कि आप लोग जो है वो लेक्चर के तो जो है वो कम से कम सुनते हैं। तो याद रखिएगा कि इसके बाद आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो कोशिश करें अपने लेक्चर को जो है वो डेली का डेली सुना करें। और जो बातें आपको बताई जाती हैं ड्यूरिंग लेक्चर के, आप लोगों ने रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी होती है। तो जब तक बच्चों आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको वो चीज़ें तैयार नहीं होंगी। तो ओके डियर स्टूडेंट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।